डिप्लीट कर रहे थे बिकॉज जर्मनी वॉज पेइंग इट इन द फॉर्म ऑफ वॉर एक्सपेंस। ये जितनी गोल्ड थी उसे वो अपनी लोन के भरपाई के लिए यूज कर रहा था, एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड दैट गोल्ड रिजर्व स्टार्टेड डिप्लीटिंग, एंड देयर वर वेरियस अदर कंट्रीज लाइक फ्रेंच एंड ऑल दीज कंट्रीज दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ जर्मनी। दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग इंडस्ट्रियल एरिया टू मीट देयर वॉर एक्सपेंस। जितनी उसने लोन ली थी, जर्मनी ने जिस भी फ्रेंच कंट्री से लोन ली थी उसे वो वापस लेने के लिए व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर जर्मन स्टेट्स, एंड वन ऑफ देम वाज रूथ। ओके, German relented with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed paper in circulation, the value of German mark fell. So what happened? The value of German mark fell. The जो German currency की, obviously when you are printing the things, when you are printing the money without thinking for a while regarding its value, definitely that will reduce the value of your currency. अभी हमारी जो इंडिया में करेंसी है वो एक certain percentage के basis पे, एक certain ratio पे print होती है. That's why the value of our money exists in the world market. अगर हमारी भी गवर्नमेंट without thinking नोट प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगी, सारे लोगों को टन्स ऑफ मनी देने लगेगी, डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ मनी विल रिड्यूस. सो सेम हैपेंड इन जर्मनी. जो जर्मन करेंसी थी, पेपर करेंसी थी, उसकी वैल्यू खत्म हो गई. In April, the US dollars were equal to 24,000 marks. In July, 3,53,000 mark, and in August, 46,21,000 mark. So just see the value. पहले क्या थी? US डॉलर कितनी वैल्यू की होती थी? एक US डॉलर 24,000 मार्क वैल्यू थी. ओके, उसके बाद क्या कितनी हुई? 3,53,000 हुई. उसके बाद 46,21,000 हो गई. सो यू कैन सी दैट कितनी ज्यादा डिप्लीट कर गई थी यूएस की करेंसी के कंपैरिजन में जर्मन मार्क की वैल्यू कितनी ज्यादा कम हो गई थी. नाउ the figure had run into trillions as the value of mark collapsed. Prices of goods soared. The image of German carrying cartload of currency note to buy a loaf of bread was widely published, evoking worldwide sympathy. This crisis came to be known as hyperinflation, a situation where price rise phenomenally high. So what happened? So इतनी ज्यादा जर्मन करेंसी प्रिंट हो चुकी थी, जर्मन मार्क इतनी ज्यादा प्रिंट हो चुकी थी कि एक सिचुएशन ऐसी आई थी वेयर पीपल यूज टू गो विथ कार्ट फुल ऑफ मनी. एक बक्से पैसे के एक बक्से के साथ जाते थे और बेकरी शॉप से उन्हें केवल a loaf of bread मिलती थी. ओके, सो जस्ट इमेजिन की प्राइस की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कितनी ज्यादा कम हो चुकी थी. सो सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन. इवेंचुअली द अमेरिकन intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davos Plan, which evoked the term of repression to ease the financial burden on Germany. So, who helped Germany? America intervened. And it introduced the Davos Plan, जिसके बाद जितनी भी सिचुएशन थी उसे null and void कर दिया गया और एक fresh economy को establish किया गया. So, you have already done year of depression. I have already sent you the video for year of depression. Now today, the next topic that we'll be dealing is the destruction of democracy. So by this time you read that Hitler जो थे वो अब धीरे धीरे political control gain कर रहे थे जर्मनी में. Now let us see. On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. So, chancellorship you can say in India, with reference to Indian form of government, you can understand that chancellor वही पोस्ट है जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट है. ओके, कैसे? ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट द वर्क इज डन. ओके, सो बिल्कुल सेम सिचुएशन है वहां पे प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर. बाय नाउ नाजीज हैड मैनेज टू रेल द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज. सो नाउ दे रेल टू मैनेज देयर कंजर्वेटिव्स जो थे उन्हें एक कॉज के अंडर में दे स्टार्टेड बिहेविंग अपने एक कॉज के
पर्सपेक्टिव से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था. उनकी एक मोटिव थी, उनकी एक इंटेंशन थी बिहाइंड ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the construction of democratic rule. So Hitler, what he started doing is, after he became the chancellor of Germany, he started dismantling the democracy. He was never in favor of democracy, because if you see in Weimar, in Germany, democracy was not a desirable form of government, because it had come with certain types of, you can say, repercussions. ठीक है, कुछ इंसल्टिंग टर्म्स यूज की गई थी, कुछ लिमिटेशंस थी डेमोक्रेसी की. दैट्स व्हाई हिटलर व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग इज ही स्टार्टेड डिसमैंटलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी. अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेट हिज मूव. सो व्हाट हैपेंड, ये बहुत एक मिस्टीरियस इंसिडेंस था. अचानक से आग लग गई थी पूरे पार्लियामेंट में, और जितनी भी ऑफिशियल पेपर्स थी जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी वो सारी जल चुकी थी. यू नो, टिल टुडे इट्स अ मिस्ट्री. पीपल डू नॉट नो कि वो आग एक्सीडेंटली लगी थी या पर्पसली लगाई गई थी. बट दिस ऑल हेल्प्ड हिटलर टू बिकम अ डिक्टेटर, क्योंकि अब डेमोक्रेसी की कोई ट्रेसेस नहीं अवेलेबल थी. नाउ ही कुड start, or he could lay the foundation of a fresh form of government, that was dictatorship. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. So since fire broke out, अचानक से आग लग चुकी थी, सारी पेपर्स जल चुकी थी, कॉन्स्टिट्यूशन जल चुकी थी. So that paved a way for Hitler to start a new form of government, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फायर डिक्री. ओके, फायर डिक्री इंट्रोड्यूस किया. एंड आफ्टर फायर डिक्री व्हाट डिड ही डू, he seized the civic rights of the people. Okay, civic rights हमारी कुछ citizens की basic rights होती हैं. इंडिया में आपको मिली हैं fundamental rights. So similarly वहां जो civic rights थी उन्हें उसने seize कर लिया. Like they could not move freely, they could not print freely, they could not read freely, they could not form an assembly. So वो सारी चीजें जो वेमा कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें लोगों को गारंटी की थी वो सारी उन्होंने वापस ले ली. Then he turned on his arch enemy, the communists, most of whom were hurriedly packed off to newly established concentration camp. So now what did he do next? He focused on the communists. So basically he was focusing on all such people who today or tomorrow may be against the Nazi party. उनकी यही फोकस थी. ऐसे लोग जो आज हमारे अगेंस्ट हैं या फ्यूचर में हमारे अगेंस्ट हो सकते हैं, उन्हें वो बिलीव करता था that they should be sent for a final solution. उन्हें concentration camp में भेज दिया गया. So first he started with the communists. People who were communist in their approach, उन्हें वो concentration camp में भेज देता है. The repression of the communists were severe. Out of surviving 6,808 files, arrested files of Duff, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victim persecuted by Nazi across the country. So बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट करवाया था. जितनी फाइल्स रिसीव की गई थी आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ हिटलर, उसमें पता चला था दैट कम्युनिस्ट जितने भी सबसे ज्यादा पहले के सेशन में जितने लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था, दे वर मैक्सिमम द सपोर्टर ऑफ, और यू कैन से दे फेवर द कम्युनिस्ट पार्टी. ओके. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established dictatorship in Germany. It gave Hitler all the powers to sideline parliament and rule by decree. All the political parties, trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army, and judiciary. So on 3rd March 1933, what happened? An Enabling Act was passed, and according to Enabling Act, dictatorship was officially accepted in Germany. And always remember, when you're talking about dictatorship, it always means such a form of government where no power is given to people. ऐसा form of government जहाँ पे कोई power लोगों के पास नहीं है, वो वही करेंगे जो उनके dictator उनसे कराना चाहेंगे. Apart from that, a dictator is a person who is single-handedly controlling all the power. It's not that he works on the consent of the council. Rather, he owns all the parties.
जब 1933 में इनेबलिंग एक्ट के बाद डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश किया गया, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट हिटलर ने नाजी पार्टी और नाजी पार्टी जिसे सपोर्ट करती थी उन पार्टीज को छोड़ के सारी पार्टीज को, वेदर दे आर नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी और ट्रेड यूनियन, उन सारे लोगों को उन्होंने इलीगल टर्म कर दिया गया. दैट मीन्स इफ यू हैड टू बी